pH of caustic soda. pH of caustic soda. pH of POP. Hello students, I hope you all are fine. Students, yesterday we have discussed about some salts like bleaching powder we have done, okay, and students baking soda also we have covered. Basic baking soda topic also we have covered. So today we will discuss about the next salt, that is the washing soda. Students, washing soda, first of all we should know about the chemical formula for this one. Washing soda chemical formula is washing soda. This one is the common name. Students, you all know, we all have two names maximum. Almost person have two names. One is the name which is mentioned in our documents. Means that is the name. Means everywhere we known by that name. Okay. And second one is the common name, which is the nickname. Only our relatives and our family members called us from them that name. Means student, that is the common name. So here also these salts also have two names. One is the washing soda. Okay, why it is known as washing soda? Because it is used for the washing purpose. Okay, then it is known as the washing soda. And students, one is the chemical name by which this is known everywhere. Okay, so washing soda is the common name. Now, what is the chemical name? Chemical name for this one. Before knowing the name, we should know about the formula. Chemical formula for this Na2CO3. This is sodium carbonate. When 10 water molecules also contained by this, then it is the washing soda. Sodium carbonate for 10 we use the word deca water hydrate, decahydrate. Okay, so students, washing soda is the common name, and sodium carbonate decahydrate, this one is the chemical name for washing soda, and Na2CO3 10H2O, this one is the chemical formula. We should know about nature also. What is the nature? Nature means either it is acidic, basic or salt. Students, washing soda means Na2CO3 10H2O. It is basic in nature. You know, it is alkaline. Students, if I talk about pH of this, you know very well, bases have pH greater than 7. So its pH is around 11. Okay. So students, washing soda is basic in nature, it is alkaline, and it has pH around 11. So these are the general points we should know about that. Now students, how can we
Prepare. How can we prepare washing soda? We should know about that also. For preparation of these students, we need sodium carbonate. We need sodium carbonate. Sodium carbonate is Na2CO3. Na2CO3. When 10 water molecules added to in this one, that it gives us washing soda. Then it gives us washing soda. Students, you know very well. You know very well when we heat. When we heat, when we heat Na2, when we heat baking soda, NaHCO3. After heating, it gives us sodium carbonate. It gives us sodium carbonate, Na2CO3. Plus it gives us some water molecules also. Some water molecules also. And students, when we add 10 molecules of water, 10 molecules of water in sodium carbonate, this Na2CO3 is known as the sodium carbonate. Sodium carbonate. When we add 10 water molecules in sodium carbonate, then students we get Na2CO3 10s2, Na2CO3 10s2. And this one is the formula for washing soda. For washing soda. So we can say students, baking soda is used for preparation of washing soda also. Okay. It is also used, baking soda is also used for this one. This one is the baking soda. Yesterday we have discussed about. This is the baking soda. So baking soda is used for preparation of the washing soda indirectly. Okay, so this is the method of preparation, students, for washing soda. So students, now see, another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 10s2O. You know very well, from sodium chloride, we get baking soda. When sodium chloride and water and carbon dioxide and ammonia, they react with each other, then they give us sodium bicarbonate, they give us baking soda. And when baking soda is heated, then we get what, students? After heating baking soda, we get Na2CO3. And after adding 10 water molecules, then we get washing soda. So student, directly we can say that sodium chloride is used for preparation of the washing soda also. Sodium chloride is used for indirectly, it is used for preparation of washing soda also. Okay. So students, you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda, and it is also a basic salt. And its pH is, students, 11. Its pH is 11. So I hope all these things are clear to you. Now students, we will see about the uses of washing soda. Where do we use washing soda? Sodium carbonate, or we can say washing soda, is used in glass, soap and paper industry. Students, it is used in glass industry, soap industry and paper industry also. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Students, it is used. भाई हम जो washing soda है इसका use
कुछ सोडियम कंपाउंड की फॉर्मेशन में भी करते हैं, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स हमारी जो आइस ड्रॉप्स होती हैं उसमें हम यूज करते हैं बोरेक्स का। स्टूडेंट्स, बोरेक्स, बोरेक्स फॉर्मूला इज borax. What is the borax? Borax is Na2B4O7 10H2O. Na2B4O7 10H2. This one is the formula. This one is the formula for this one is the formula for borax. So borax, it is used in eye drops. So students, washing soda is used. Washing soda is used for preparation of this compound. This is the borax. Then sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. Means it is used for cleaning also. It is used for removing permanent hardness of water. Students, you know, what do you mean by the hard water? What do you mean by the hard water? Two types of water. One is the soft water. Soft water. Second one is the hard water. Hard water. Students, soft water is that which make froth in water and which do not form froth in water. यू नो स्टूडेंट्स, दो टाइप का पानी होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो अभी हम घर में जो नहाने के लिए यूज करते हैं, कपड़े वॉश करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द सॉफ्ट वाटर। जो स्टूडेंट्स फ्रोथ बना लेता है सोप में बहुत ही जल्दी। फ्रोथ क्या होते हैं? झाग, जिनका साबुन में बहुत ही जल्दी झाग बन जाता है, वो क्या है? सॉफ्ट वाटर है। वो क्या है? सॉफ्ट वाटर है। बट स्टूडेंट, हार्ड वाटर क्या होता है? जो खारा पानी जो हमारा होता है, क्योंकि खारा पानी क्या है? जिसमें बहुत सारे सोल्ट्स मिले होते हैं, जिसमें बहुत सारे सोल्ट होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, जिसमें बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन सोल्ट्स होने की वजह से क्या होता है? वो स्कम बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं साबुन के साथ में वो पानी जो क्या कर लेते हैं? स्कम बना लेते हैं, पिपिटी बनाते हैं। वो साबुन के साथ में फ्रॉथ फॉर्मेशन नहीं कर पाते, झाग नहीं बना पाते। तो उस पानी को जिसके जो साबुन के साथ जिनमें साबुन के झाग नहीं बनते, उस पानी को हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। ये हार्डनेस स्टूडेंट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू द क्लोराइड्स ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम। कार्बोनेट्स की वजह से भी हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू द कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये हमारी सल्फेट्स की वजह से भी होती है। कई बार किसकी वजह से भी होती है? सल्फेट्स की वजह से भी। दो टाइप की हार्डनेस होती है स्टूडेंट्स, दो टाइप की हार्डनेस होती है। एक तो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस, वन इज द टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड वन इज द परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है स्टूडेंट्स जो इजीली फिल्ट्रेशन से, बॉइलिंग से रिमूव की जा सकती है, विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और बॉइलिंग ओनली, which can be removed by filtration or boiling only. Okay, it can be removed by filtration or boiling. But permanent hardness students, it cannot removed by boiling or by filtration only. We need to do treatment. We need to give treatment to this one. Okay, and students,
Sodium carbonate is one of the compound which is used for removing the permanent hardness of the water. Okay, so student, I think आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है. सॉफ्ट वाटर होता है जो साबुन में झाग बन जाते हैं. जिस पानी में साबुन के झाग बनते हैं वो हमारा सॉफ्ट वाटर है. ओके, और जिस पानी में साबुन के झाग नहीं बनते, हमें एक सॉलिड पीपीटी टाइप सा मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर. हार्ड वाटर झाग नहीं बनाता. ओके स्टूडेंट, साबुन के झाग नहीं बनते इस पानी में. ये हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से हो सकती है, कार्बोनेट्स की वजह से हो सकती है और सल्फेट की वजह से भी हो सकती है. ओके, दो टाइप की हार्डनेस है स्टूडेंट्स, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिसको इजीली फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल से दूर किया जा सकता है. बट परमानेंट हार्डनेस वो होती है जिसको किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ ही, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ हमने ट्रीट करवाना होगा, तभी हम हार्डनेस को रिमूव कर पाते हैं. अदरवाइज सिंपली बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाते. तो सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा भी उनमें से एक कंपाउंड है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है, जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है. ओके, देन स्टूडेंट्स, so these are the uses of the washing soda. फर्स्ट थिंग, वॉशिंग सोडा का यूज हम ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, सॉफ्ट फॉर्मेशन में करते हैं, और पेपर इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं. हम वॉशिंग सोडा का यूज स्टूडेंट्स कुछ सोडियम कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, Na2CO3 10S2O सोडियम है, तो ये कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज होता है, जैसे कि बोरेक्स बनाने में. बोरेक्स का जो यूज है हम वो आई ड्रॉप्स में करते हैं. तो बोरेक्स जो है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला है Na2B4O7 10S2O. 10th लेवल के लिए काफी है. उसके बाद स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट्स एज ए क्लींजिंग एजेंट भी हम इसका यूज करते हैं. ओके, और स्टूडेंट्स ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का भी काम करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कंपाउंड. We will discuss the next salt, that is the plaster of Paris. What is the plaster of Paris, students? On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 half H2O. This is called the plaster of Paris. Substance which doctors use as plaster for spotting fracture bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes the gypsum once again, giving a hard solid mass. Students, first of all, how can we prepare? First of all, we should know about the chemical name. Before knowing the name, you should know about chemical formula. Chemical formula is CaSO4 half H2O. Ca calcium, CH calcium, SO4 sulfate, calcium sulfate, half mean hemi, H2O hydrate. So students, what is the name here? What is the name for this salt is calcium sulfate hemihydrate. And chemical formula for this, CaSO4 half H2O. Okay, so students, this one is the chemical name calcium sulfate hemihydrate, and this one is the chemical formula CaSO4 half H2O. Now students, what is the nature for this one? Students, here it is used. How can we prepare this one? First thing, CaOH2
plus H2SO4 plus H2SO4. You know very well. It is combination. It is combination of the calcium hydroxide and sulfuric acid. Students, here calcium hydroxide is strong base. Calcium hydroxide is strong base here, and sulfuric acid sulfuric acid is also strong acid. Okay, so strong base and strong acid. And you know very well, when acid and base combine with each other, then they show the neutralization process. What will happen? Salt formation take place. CaSO4, okay, plus students water. So CaSO4, calcium sulfate is salt here, and student, this salt is formed by strong acid and strong base. So what will be the nature? For this one? Nature for this one will be the neutral. It is the neutral. Okay students, it is neutral. Okay, why it is neutral? I already discussed. When acid and base react with each other, then they give just salt and water, and this process is known as the neutralization process. And students, salts may be acidic, may be basic, and may be neutral also. It will depend by which acids and base salt is made up of. If we combine the strong acid and strong base, then the salt which we get, it will be neutral. So here we are mixing calcium hydroxide, which is the strong base, and sulfuric acid. This one is also strong acid. So strong acid and strong base combine with each other, and they give just the salt, and it is neutral in nature. Okay students, so these are the common points we should know about bleaching. We should know about plaster of Paris. First one, plaster of Paris is the common name, and calcium sulfate hemihydrate, this one is the chemical name for this one. And CaSO4 half H2O, this one is the chemical formula, and it is neutral. Okay, now students, how can we prepare plaster of Paris? How can we prepare this? Students, when gypsum. What is the gypsum? Gypsum is calcium sulfate or we can say dihydrate. Calcium sulfate dihydrate. This is gypsum. This is the gypsum. When students, we heat gypsum at 373 Kelvin, or we can say 100 degrees Celsius also. Then what will happen? This will lose its water molecules, and it gives POP. Plaster of Paris. It gives POP, plaster of Paris, plus 1.5 water molecules. Okay, it will give just POP and 1.5 water molecule. So students, here you can see, when gypsum is heated, gypsum, it is a hard substance. Okay, when gypsum is heated at 373 Kelvin temperature, then it gives us POP, it gives us plaster of Paris. Okay, and students, this plaster of Paris can be further converted into the gypsum. This plaster of Paris can be further crystallized. Okay, what will happen when we mix or we can say this one is reversible process. This is the POP, plaster of Paris. When we mix water molecule further, how many?
1.5 water molecules. Then students, again it gives us gypsum. Again it gives us gypsum. Again it will give us gypsum. Okay, so students, here we are having gypsum. When gypsum is heated at 373 Kelvin, or we can say 100 degrees Celsius also, because you know very well we can convert degree Celsius into Kelvin by adding 273. Okay, so it convert into the POP. But when we crystallize POP by water again, if we will mix with water again, it can be convert into the gypsum. It can be convert into the gypsum. Okay, so I hope this method of preparation is clear to you. Now students, we will discuss about the uses. We will discuss about the uses. Uses, student, first of all, this substance is used by doctors for supporting the fractured bone. For supporting the fractured bone. स्टूडेंट्स, कई बार जब हम कहीं गिर जाते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, हमारी बोन्स में क्रैक आ जाते हैं, हमारी बोन्स में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता है. तो उस फ्रैक्चर्स को सपोर्ट देने के लिए, फ्रैक्चर को सपोर्ट देने के लिए आपने देखा होगा कई बार एल्बो से या फिर कहीं और से फ्रैक्चर अगर हो जाता है, क्रैक आ जाता है बोन्स में, तो डॉक्टर उसको सपोर्ट देने के लिए, हमारी बोन को ज्वाइन करके उसको जोड़ के उसको सपोर्ट देने के लिए फिर क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं. तो वो प्लास्टर किसका होता है, वो प्लास्टर यही पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला यही है CaSO4 half H2O, CaSO4 half H2O. So first one uses is used by doctors for supporting the fractured bone. For supporting the fractured bone. Okay, now we will see the second point. Fractured bone. In right position, plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes into gypsum again. Yes, and students, it is also used for making decorative toys. Okay, or we can say for making decorative items and for making toys. इसका यूज स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में कई बार आप शॉप वगैरह पे भी जाते हैं, वहाँ एक थोड़ा सा मिट्टी टाइप सा जो आपको व्हाइट कलर की जो टॉयज दिखाई देते हैं, कई बार बच्चे भी इन टॉयज का यूज करते हैं. ओके, तो वो डेकोरेटिव आइटम्स या टॉयज बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का. आजकल जो हम सीलिंग्स वगैरह में यूज करते हैं वो भी किसका यूज कर रहे हैं, पीओपी का. वो भी किसका यूज कर रहे हैं हम, पीओपी का. तो वो पीओपी क्या है, CaSO4 half H2O. किसका यूज कर रहे हो आप, CaSO4 half H2O का. आप किसका यूज कर रहे हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का. ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का. ओके, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट. कैसा कलर होता है, व्हाइट. और फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 half H2O, CaSO4
all the topics. Almost we have covered all the topics of this unit. Okay, so students, tomorrow we will discuss about the NCRT portion. We will cover. Then we will discuss some PYQ. I hope these two salts are clear to you. One salt we have discussed, washing soda, and second one we have discussed about the plaster of Paris. So I hope all these are clear to you. So thank you. Have a nice day.